कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं प्रदेश में। देश की अगर बात करें तो देश में 724 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है और कोरोना से अब तक कुल पूरे देश में 17 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना और 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और कोरोना पर नोएडा से भी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और नोएडा में ही अगर हम बात करें तो अब तक कोरोना के 17 मामले पहुंच चुके हैं और अस्पताल में भर्ते हैं तीनों ही कोरोना के मरीज। इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है नोएडा से। यह आंकड़ा अब तक 14 था लेकिन 17 पहुंच चुका है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, नोएडा में तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो ये 3 नए केसेस आए हैं, ये इन केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह की है और कब डिटेक्ट हुआ है कोरोना? देखिए राजीव, जो नए 4 केस आए हैं इनमें एक 33 वर्षीय महिला है नोएडा की, एक 54 वर्षीय महिला है और एक 36 वर्षीय पुरुष है। इसमें से अगर 33 वर्षीय महिला की बात की जाए तो ये एक दूसरे पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आई थी और उसके बाद इसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से जो 54 वर्षीय महिला है ये भी एक पॉजिटिव महिला, ये भी एक पॉजिटिव से कांटेक्ट में आने के बाद संक्रमित हुई है। जबकि जो 36 वर्षीय पुरुष की बात की गई है नोएडा में, इसकी फिलहाल अभी हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन 2 लोगों का इस तरह से सामने आना ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं अब उन लोगों से कोरोना जो है लगातार दूसरे लोगों में फैल रहा है। ऐसे में जो लॉकडाउन किया गया है 21 दिन का, इसको और ज्यादा प्रभावी रूप से अमल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं शैलेश, क्या ये इशारा करता है कि जो कम्युनिटी ट्रांसफर है जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया, ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर आगे बढ़ गया है ये कोरोना? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि ये जो लोग, जो नए पॉजिटिव केसेस हैं, ये कहाँ, नोएडा में कहाँ के रहने वाले? क्या और ज्यादा जानकारी मिल पाए इनके बारे में? राजीव देखिए, अभी नोएडा में इनके लोकेशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इनके लैब जो थे, सैंपल जो थे वो केजीएमयू में टेस्टिंग के लिए आए थे लखनऊ में। और केजीएमयू से अभी जब ये रिपोर्ट जनरेट हुई है तो इन 4 लोगों में, क्योंकि लगातार केजीएमयू में 20, 30, 40 इस तरह सैंपल आ रहे हैं रोजाना 50, और उनमें से ये 4 जो सैंपल है जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें पॉजिटिव मिले। बहरहाल ये साफ है इन सब में कि अब कोरोना का जो है मामला वो एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो रहा है और संक्रमित हो रहे हैं लोग इस तरह से, तो निश्चित रूप से काफी चिंता की बात है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देखिए, जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं उनको निश्चित रूप से वो सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी लोग नहीं मानेंगे और लगातार घरों से बाहर निकलेंगे और लोग संक्रमित होंगे, तब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद कितने लोगों को आइसोलेट किया जाए, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल शैलेश, आप हमारे साथ बने रहें। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 46 मामले अब हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमने आपको 42 बताए थे पहले, लेकिन आंकड़ा देखिए कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, कितनी जल्दी बढ़ रहा है। 46 से हो गया है। अगर विश्व के दूसरे देशों से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारे देश की परिस्थितियों, हमारे देश के संसाधनों को देखते हुए अगर हम कहें तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, समझ लीजिए कि परेशानियां उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अपने घर पर रहें, इसीलिए हम अपील कर रहे हैं, इसीलिए सरकार अपील कर रही है, इसीलिए प्रशासन कह रहा है कि आप अपने घरों के भीतर रहें। देखिए 46 हो गया है, आपके घर के बाहर कोरोना तैयार खड़ा है, वैसे में उसको घर के बाहर ही रहने दें, आप घर के बाहर मत आइए।
तो 46 मरीज हो गए हैं अब तक और ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। शैलेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो केजीएमयू में पहुंचे 3 लोगों के जांच के जो सैंपल्स थे और वो पॉजिटिव मिले हैं और उपचार इन सभी का चल रहा है आइसोलेशन में। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई है और तीसरी बार जय प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये भी एक बड़ी खबर और ये राहत भरी खबर है क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का भी सैंपल लिया गया था और उनका सैंपल जो है वो नेगेटिव आया। तीसरी बार जय प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री के परिवार का सैंपल भी लिया गया था। अभी आइसोलेशन में जय प्रताप सिंह रहेंगे, आइसोलेशन में है और सिंगर कनिका की पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए थे। और अनुभव संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, ये तो राहत भरी खबर है, अच्छी रिपोर्ट है कि नेगेटिव आई है। देखिए, बिल्कुल राजीव, आपको पता ही है कि किस तरीके से जय प्रताप सिंह जो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उस पार्टी में शामिल थे जहां सिंगर कनिका कपूर भी मौजूद थी और उनको जब पॉजिटिव वो पाई गई थी उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी अपना कोरोना जांच कराई थी और पहली जो जांच अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस वक्त आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And since there is no press conference, I have tried to make my statement as explanatory as possible, as self-explanatory as possible, so that the room for questions, etc., are minimized considerably. So therefore, the statement is a bit long. I request your patience, and I would also request you to please be patient till the end, because towards the concluding paragraphs, I have tried to give some forward guidance. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee decided to advance its meeting, which was originally scheduled on 31st March and 3rd April, and the announcement was due to be made on 3rd April. We decided to announce it to 24th, 26th and 27th. Accordingly, the MPC met on 24th, 26th and 27th March and undertook a careful evaluation of the current and evolving macroeconomic and financial conditions, and of course the outlook. I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to the MPC members for responding so quickly. I also wish to place on record my appreciation of all the staff and officers of RBI for their excellent cooperation in facilitating this. After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to, 1,
mitigate the negative effects of the virus, 2, to revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence, and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth, and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread, and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020, within the annual estimate of 5% for the year as a whole, is now at risk. As regards the outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread, and duration. We have to recognize that the government has taken timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread, and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I'm just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary,
fiscal and other policy measures, and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptick. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility, unprecedented uncertainty, and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread, and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we, all of us, every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless, the priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion. Countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all, preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the Statement on Development and Regulatory Policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers.
The developmental and regulatory policies can broadly be delineated under 4 categories. First, measures to expand liquidity in the system sizably to ensure that financial markets and institutions are able to function normally in the face of COVID-related dislocations. 2. Steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3. Efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4. Endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. I would announce them in broadly 3 sections. The first section relates to liquidity measures. A multi-pronged approach comprising both targeted and system-wide liquidity provision has been adopted to ensure that COVID-related liquidity constraints are eased. The first announcement relates to targeted long-term repo operations, TLTRO. Let me elaborate further. Large sell-offs in the domestic equity, bond and forex markets have intensified redemption pressures. Liquidity premia on instruments such as corporate bonds, commercial papers and non-convertible and debentures have surged. Financial conditions for these instruments, which are used inter alia to access working capital in the face of the slowdown in bank credit, have also tightened. तो शक्ति का अंदाज को आप सुन रहे थे और रेपो रेट घटा दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट भी घटा दिया गया।